Students. In the today lecture, it is the third lecture, and we have to discuss about the process models, or you can say software life cycle models. The notes that I share with you, in all notes, these process models or life cycle models has been discussed in different ways, but the main concept of all the process model is same. These are all the ways of describing these models. So what is basically a process model and what is process? We also have a discussion about that. Process is basically a well defined set of activities, clear, well defined set of activities that is used to construct or build a software. And we also discussed that, if you do remember, in the Roger Pressman notes or books, that it is a layered technology. What is process? Process basically a layer technology, and we said that it consists of the four layers. It means tools, methods, process, and quality. These are the four layers of what? These are the four layers of the process. What are tools? Tools are the different techniques that are used for the building of software. For example, we use .NET tools. We use to have you can say Oracle tools. We use other tools to build a software. According to the nature, we select a tool. Similarly, there are different methods of the construction of the software. For example, case method, CAM method, clear, and case method, case computer aided software engineering, computer aided manufacturing, computer aided designing, etc. These are all the methods that are used for the construction of software. And similarly, we discuss about the process, that it is like a glue that paste or combine all the activities of the process. The main activities of the process are four that we have discussed in the last lecture, if you do remember. The first one is specification, the second one is development, and the third one is you can say the first one was what? The first one was specification, the second was development, the third one is known as validation, and the fourth one is known as evolution. These were the four activities that consist in each and every software process, clear? So we come to know now that the software process model is basically a well structured approach for the construction of a software. So in the early days, there was a single approach for the construction of the software that was known as system development life cycle, or you can say SDLC. That was one of the single approach that was used for the designing of each and every nature of the software. As I have discussed with you, that nature of the project is different. Some projects are linear, some projects are iterative, some projects are prone to change, and some are risky. So there are different types of nature of the project. So according to the nature of the project, we have to adopt a process model. Therefore, process model is what? It is a representation. It is basically the representation of a well structured representation of different types of approaches to develop a software. So in in the past days, only one approach, that is called SDLC, system development life cycle, that would be used for the construction of each and every type of the project. As we have discussed in the class, that in the case of medical, in the older days, a single doctor or a single compounder was used to he has to treat each and every type of disease, क्लियर? जैसे बताया था आपको कि एक कंप्यूटर होता था और वो हर किस्म के डिजीज़ का इलाज करता रहता था. सो दैट वाज द केस. लेकिन आज हम देखते हैं इन द मेडिकल प्रोफेशन, ईच एंड एवरी जो ह्यूमन ऑर्गन है उसके अपनी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है और उसके मुताबिक वो ट्रीटमेंट करता है. जो फिजिशियन होता है वो ठीक है, वो जनरली आपकी बॉडी को तो ऑब्जर्व कर सकता है, लेकिन अगर आप कोई प्रॉब्लम है तो यू हैव टू कंप्लीट एंड तारो एंड जो उसकी डायग्नोसिस है उसके लिए आप स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाते हैं. सो प्रोसेस मॉडल जो है, इट इज़ द स्पेशलाइजेशन ऑफ ईच एंड एवरी नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट. वाइल SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो अप्रोच था, दैट अप्रोच वाज अ जनरल अप्रोच, एंड जो प्रॉब्लम डिफिनीशन से शुरू होता था, प्रॉब्लम डिफिनीशन, देन डेटा गैदरिंग, देन सिस्टम एनालिसिस, देन डिजाइनिंग, देन कोडिंग, देन टेस्टिंग, एंड देन implementation of the project, and in the last maintenance. So these were all the phases and stages of the SDLC, system development life cycle, that has already been elaborated in the different types of notes that I have shared with you. Problem definition में क्या होता था कि जो प्रोजेक्ट हमने डेवलप करना है, उस प्रोजेक्ट हमने डेवलप करना है, तो वो प्रॉब्लम है, वो प्रोजेक्ट है क्या, उस प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाए. मैंने आपसे कहा था कि क्लास में शेयर किया था कि हम 2 रीजंस की वजह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं या सॉफ्टवेयर को कंस्ट्रक्ट करते हैं. या तो वहाँ कोई प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करना है, सॉल्व करना है, या वहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स तो कोई नहीं है, लेकिन हम जो है
उसको डिजिटाइज करना चाहते हैं और उसमें एडवांसमेंट लाना चाहते हैं, उसमें करेक्टनेस एक्यूरेसी लाना चाहते हैं, यानी उसका मतलब है कि उसको स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं। द सेकेंड टास्क वाज स्टैंडर्डाइज। तो हम या तो स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो द केस में एनी बी। लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, पहले उस प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ता है कि हमें ये टास्क या ये जॉब है जिसको हमने डिफाइन करना है, फिर उसके बाद उस टास्क या जॉब के मुताबिक हमें उसके डेटा जो है वो गैदर करना पड़ता है। जो डेटा हम गैदर कर लेते हैं, फिर उस डेटा गैदरिंग के हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि हम उस डेटा को ये देख ले कि कौन सा डेटा कहाँ से रिलेटेड है, ठीक है ना, उसकी सिचुएशन कहाँ पर है, उसमें कौन कौन से सेक्शंस हैं, फिर उसमें कौन सा वैलिड इनवैलिड डेटा है, फिर उसका फंक्शन है, कौन सा नॉन फंक्शनल है, कौन सा सिस्टम डेटा है, कौन सा यूजर डेटा है, ये सारे काम करना, इसको हम कहते हैं सिस्टम एनालिसिस। और ये प्रोसेस मॉडल्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसको रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कहा जाता है। सो उसमें SDLC में जो है वो पहले सिस्टम एनालिसिस के बाद फिर सिस्टम डिज़ाइन में हमने जो डेटा गैदर किया है उसको अब कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में, कंप्यूटर प्रोग्रामेबल फॉर्म में। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो फॉर्म है वो क्या कहलाता है, वो डिज़ाइन कहलाता है। पहले लॉजिकल डिज़ाइन होता है, फिर पहले कंसेप्चुअल डिज़ाइन होता है, फिर लॉजिकल डिज़ाइन होता है, और फिर ये जो है वो फिजिकल डिज़ाइन होता है। कंसेप्चुअल डिज़ाइन वो है कि जो हमारे माइंड में होता है, हम थिंक करते हैं ऐसा होना चाहिए, उसको हम ऑन पेपर में लाकर कस्टमर से शेयर करते हैं, उसमें जो चेंजेस वो सजेस्ट करते हैं, ट्राई हम ये करते हैं कि यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन बने। उस लॉजिकल चीज़ को फिर हम जब कंप्यूटर की मेमोरी में कन्वर्ट करते हैं उसको हम फिजिकल कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये डिज़ाइनिंग होगी। डिज़ाइनिंग के बाद हम प्रोग्रामर को बिठाते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट कोई टूल कोई सेलेक्ट करता है जिसमें वो कोडिंग करता है, प्रोग्राम को डेवलप करता है। जब वो प्रोग्राम डेवलप हो जाता है फिर उसकी टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है। टेस्टिंग में डिफरेंट टाइप्स की टेस्टिंग्स है, ठीक है ना। क्यों डिफरेंट टाइप्स की टेस्टिंग है, कहीं पर हम उसके स्ट्रक्चर को चेक करते हैं, कहीं पर हम उसके जो है वो फंक्शनलिटीज़ को चेक करते हैं, कम उसे यूज़र इन पे चेक करते हैं कि यूज़र इन पे क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं है। तो ये सारे जितने भी टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है उससे जब गो थ्रू किया जाता है सॉफ्टवेयर को, तो उससे सारे जितने भी डिफिशियंसीज है, शॉर्टकमिंग्स है, फॉलकमिंग्स है, ड्रॉबैक्स हैं, डिफेक्ट्स हैं, एरर्स हैं, बग्स हैं, वो सारे रिमूव किए जाते हैं। रिमूव होने के बाद जो हम फिर सिस्टम जो है वो कस्टमर को हैंड ओवर होने के काबिल होता है, फिर हम उसको हैंड ओवर कर सकते हैं। फिर हम उसकी जो है वो वहाँ पर क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है द यूज़र साइड, फिर यूज़र को उस पर ट्रेनिंग दिया जाता है, फिर यूज़र उसको यूज़ करता है, फिर यूज़र फीडबैक के मुताबिक जो कमी बेशी होती है उसको पूरा किया जाता है। इस प्रोसेस को फिर हम मेंटेनेंस कहते हैं। तो ये SDLC के जो है वो सारे स्टेप्स हैं। मुख्तलिफ नोट्स में ये SDLC के स्टेप्स भी मैंने आपसे शेयर किए हैं, ठीक है बेटा। सो इस वक्त जो हमारे पेश नज़र है वो प्रोसेस मॉडल्स हैं। तो डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स हैं अकॉर्डिंग टू, जैसे मैंने बताया, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सॉफ्टवेयर डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स का, टास्क या जॉब्स का नेचर जो है वो लीनियर होता है, तो उसके लिए हम लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल्स या वाटरफॉल मॉडल यूज़ करते हैं। कुछ का नेचर आइटरेटिव होता है, कुछ का इवोल्यूशनरी होता है, कुछ का एजाइल होता है। तो जिस तरह का नेचर होता है उसी तरह के हम जो है वो प्रोसेस मॉडल को सेलेक्ट करके उसकी डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है बेटा। सो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल या सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल क्या है, द period of time that start when a software product is conceived and ends when the product is no longer available for use. The software life cycle typically includes the requirement phase, design phase, implementation phase, test phase, installation, checkout phases, operation and maintenance phases, and some other are जो है वो retirement phase. That mean how the software will be handed over to there. So the first process model that is very simple in use, but that is you cannot say that is in very detail or very standard, but that is a general model that we have to use, that is called built and fixed model. Built and fixed model, according to this model, we just take a task or job, we code that, build that, and we apply that. If there is any problem, then we will fix the problem. This build and fix it is an ad hoc approach and not well defined, as I have told you. So it is also generally used by the people for the construction of small types of task or job. It is not suitable for large projects and large programs. So it build and fix suitable for small programming exercises of 100 to 200 lines, unsatisfactory for software of any reasonable size. Code soon becomes unflexible and unenhanceable. No room for structured design and maintenance is practically not possible in this model. So it is a general model that is used by the people for small programs. The next model is known as waterfall
waterfall model. It is also called linear sequential model or LSM model. In this model, basically, why it is called waterfall? We know that each and every process model consists of phases and stages. So in this waterfall model, the phases are in the form of a waterfall. Mean the one when the one phase will be completed, then the next phase will be started, then the next phase will be completed, so next and so on, so on. So it is a top to bottom approach. In which the water flows is from the waterfall. So in the cases here with us, so it's mean that therefore it is called waterfall. But the problem is we can't go further in the waterfall model. When one phase is not completed, we can't go to the next phase. So, and one thing, the second thing is iteration in the first LSM or waterfall model was not possible. In the enhanced waterfall model, it is possible, but not in the sense that we have discussed as in the earlier stages. So it consists of the requirement analysis and specification stage, then the design stage, then the implementation and unit testing stage, then integration and system test, and loss, operation, and maintenance test. As I've told you, in the requirement stage, we gather requirement, then engineer the requirements, and then these requirements will be converted into design. The design will be converted into the code will be converted to testing, and the testing will be converted into implementation, and then maintenance. So these are the phases of what? These are the phases of waterfall. So this model is easy to understand and reinforces, but the notion of define before design and design before code, clear? This is one of the things that we have to understand. Define before design and design before code. So once you have done something, then the repetition, or you can say go back, is a problematic case here. You have to refresh the whole program in this case. So the model expects complete and accurate requirement early in the phase in the process, which is unrealistic. So this model, when we use waterfall model, in the cases where the waterfall model is suggested, the first thing, where the requirements are available, the requirements are totally open, and the requirements are totally well defined. When the requirements will be available, it will be cleared, it will be well defined, then we will use the waterfall model. In other cases, this is one of the case. The second case, we will use in such areas the waterfall model where there is no much more iteration, mean no change. Does not accept changes in the waterfall model. So we will use the waterfall model where the change is not there, much more change is not favorable at there. Then we will use the waterfall model. Simply वर्ड में हम बेटा ऐसा कह सकते हैं कि जहां हम वहां पर waterfall model यूज करेंगे कि जहां पर रिक्वायरमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हो, विल डिफाइन हो, और जहां पर चेंजेस या रिपीटिशन ज़्यादा मौजूद ना हो, वहां पर वाटरफॉल मॉडल को यूज़ किया जा सकता है. क्योंकि वाटरफॉल मॉडल्स के कुछ प्रॉब्लम्स हैं. द फर्स्ट प्रॉब्लम, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिफाइन ऑल रिक्वायरमेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट, नंबर वन. सेकंड, दिस मॉडल इज नॉट suitable for accommodating any change. Third, a working version of the system is not seen until late in the project's life. Number four, it does not scale up well to large projects. बिकॉज लार्ज प्रोजेक्ट में आपको पता है कि विद द पेस ऑफ टाइम चीज़ें इवॉल्व होती रहती है और इसका नेचर एवोल्यूशनरी नहीं है. रियल प्रोजेक्ट्स आर रेयरली सिक्वेंशियल. ये एक है वो है फैक्ट है कि जो हकीकी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बड़े कम ऐसे होंगे कि जो सिक्वेंशियल होंगे, क्योंकि चीज़ें रैंडमली एग्जीक्यूट होती रन होती रहती है. तो इट वाज द फर्स्ट प्रोसेस मॉडल दैट वाज कॉल्ड व्हाट? वाटरफॉल और लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल. सेकेंड मॉडल दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल. They are effective in the situation where requirements define precisely and there is no confusion about the functionality of the final product. Then we will use what? Then we will use the sequential model, incremental model. After every cycle, a usable product is given to the customer. Popular, particularly when we have to quickly deliver a limited functionality of the system, then we will use what? Then we will use the increment. यानी हम वहाँ incremental model यूज़ करेंगे बेटा, जहाँ पर हमारे पास requirements हो लेकिन totally at a time available ना हो ज़रूर. तो जितने available हो हम उतनी requirements की base पर जो है उसकी development करेंगे और उसको user को hand over करेंगे. User उसको check करेगा, अगर वो उसके task या job को completely fulfill करता है, it's okay. Then we will go to the next increment for development. जिसके हैं कम से कम वो तो हम develop कर दें. हम इसमें wait नहीं करते
कि जब तक ये सारे पूरे नहीं होते तो उस वक्त हम डेवलप नहीं शुरू करेंगे। इंक्रीमेंटल मॉडल में हम ऐसा करते हैं कि जितने रिक्वायरमेंट्स हमारे पास, जितने सेक्शंस के अवेलेबल होते हैं उनको हम शुरू कर लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ सेक्शन के रिक्वायरमेंट हमारे पास कंप्लीट हो, कुछ के जो है वो हाफ हो, कुछ के अवेलेबल ना हो, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम ये सारे रिक्वायरमेंट्स हमें अवेल हो ही जाते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स की अवेलेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है। तो देयरफॉर इंक्रीमेंटल मॉडल इज़ अ वेरी गुड अप्रोच इन दिस सेंस कि आप जो है वो प्रोजेक्ट आपका लेट नहीं होता, ऑन टाइम डिलीवर हो जाता है, यूज़र जो है वो वेट नहीं करता, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपने उसको प्रोडक्ट मिलता रहता है और उस प्रोडक्ट की जो है वो इन्हांसमेंट होती रहती है। तो इंक्रीमेंटल मॉडल इज़ वन ऑफ द very good approach for this in this sense. Iterative enhancement model. This model has the same phase as the waterfall model, but with a few restrictions. Generally, the phases occur in the same order as in the waterfall model, but they may be conducted in several cycles. Usable product is released to the end of each cycle, with each release providing additional functionality. For example, customer and developers specify as many requirements as possible and prepare SRS, software requirement specification document. SRS stand for software requirement specification document. Developer and customer then prioritize these requirements. Developer implement the specified requirements in one or more cycle of the design, implementation and test based on the defined priorities. ठीक है बेटा, जितनी चीज़ें अवेलेबल होती है कस्टमर और डेवलपर आपस में बैठ के वो सारे शेयर कर लेते हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स है, इसकी ये प्रायोरिटी, पहले ये करना चाहिए, उसके बाद ये करना चाहिए। ये किस्म के जो वो है ना बेटा मॉडल्स हैं वो आइटरेटिव नेचर, इसमें रिपीटिशन हो सकती है। एक साइकिल जो है वो दूसरे साइकिल में कन्वर्ट होता है, तो साइकिल के अंदर इन सारे डेवलपमेंट साइकिल्स के अंदर रिपीटिशन हो सकती है और होती है, इसीलिए हम जो है इसके लिए आइटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल यूज़ करते हैं। अगर आप इस पिक्चर को देख ले बेटा गौर से, तो इसमें रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से लेकर जो है वो इंटीग्रेशन और टेस्टिंग तक आप देख ले, तो ये सारे प्रोसेस में साइकिल्स हैं और ये साइकिल रिपीट होते रहते हैं। और अगर एक साइकिल से हम दूसरे साइकिल, वाटरफॉल में ये था कि जब तक ये कंप्लीट नहीं होता हम आगे नहीं जा सकते, यहाँ पर ये कि हम आगे जा सकते हैं, आगे फेज़ में जाएंगे, जितना हमें अवेलेबल था वहाँ काम करेंगे, जो डिफिशिएंसी होगी उसको पीछे आकर ओवरकम करते रहेंगे। इस तरह से जो है वो काम लेट भी नहीं होता और विद द पैसेज ऑफ टाइम जितनी भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट होती रहती है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? आइटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल कहा जाता है। दैट इज द एडवांस फॉर्म ऑफ वाटरफॉल मॉडल। द नेक्स्ट मॉडल विद अस इज रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। इट इज वन ऑफ द मॉडल दैट इज यूज्ड फॉर द क्विक एंड फास्टेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट और द टास्क और जॉब और द प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट हो और वो 60 to 90 डेज में 2 से लेकर 3 मंथ्स के अंदर उसकी डेवलपमेंट करनी हो, तो वी विल चूज द रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल एक ऐसा मॉडल है बेटा जो जिसमें क्विकेस्ट डेवलपमेंट आप करते हैं और यूज़र जो है वो यूज़र को आपका प्रोजेक्ट विद इन 2 to 3 मंथ्स जो है वो आप प्रोवाइड कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ये मॉडल क्या है? इट इज़ अ बिल्ड रैपिड प्रोटोटाइप, गिव इट टू यूज़र फॉर एवोल्यूशन एंड ऑब्टेन फीडबैक। प्रोटोटाइप इज रिडिफाइंड until the user is not satisfied or until the final version is not obtained or developed, उस वक्त तक हम ये सारा प्रोसेस रिपीट करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, इसके मेन 4 फेजेस हैं इस मॉडल के। रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग है, यूजर डिस्क्रिप्शन है, कंस्ट्रक्शन है और कट ओवर है या हैंड ओवर द प्रोजेक्ट टू द यूजर है। अब इसमें आप देख लो बेटा, ये 4 फेजेस के अंदर ये सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। फर्स्ट में हम रिक्वायरमेंट्स की प्लानिंग करते हैं, जितने रिक्वायरमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम प्रोटोटाइप को बिल्ड करते हैं। वो प्रोटोटाइप जो है प्रोटोटाइप को बिल्ड कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, यूज़र से शेयर करते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं और फिर उसको जो है वो यूज़र को हैंड ओवर करते हैं। यूज़र उसको यूज़ करते हैं, उसमें जो डिफिशिएंसी कमी पेशी होती है वो हमें तो बताता रहता है, पर हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं सो ऑन अनटिल अनलेस द रिक्वायर्ड वर्जन इज नॉट ऑब्टेन। ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। इसको हम कहते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। कहा जाता है कि it has also some problem, not an appropriate model in the absence of the user participation. Reusable components are required to reduce development time. अगर आप हमारे पास कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसको reusable component हम कहते हैं, वो इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर और जल्दी डेवलपमेंट हमारी कंप्लीट हो जाती है। अगर ऐसा होता है तो इससे हमारा टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन रिड्यूस हो जाता है। हाईली स्पेशलाइज्ड एंड स्किल डेवलपर आर रिक्वायर्ड एंड सच डेवलपर्स आर नॉट इजीली अवेलेबल। ये भी एक प्रॉब्लम बेटा कि
अगर आप रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूज़ करते हैं, और रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास हाईली स्किल्ड पर्सन मौजूद हो। हाईली स्किल्ड से मुराद ये है कि वो क्विक टाइम में आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करे, कोड करे, टेस्ट करे और हैंड ओवर कर दे। लेकिन अक्सर औकात ये प्रॉब्लम होता है कि ऐसे हाईली स्किल्ड पीपल मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। सो द नेक्स्ट प्रोसेस मॉडल्स आर evolutionary models. Evolutionary models are the types of model where the data is not available, all the data is not available at once, but the data will made be available with the passage of time. हम कहते हैं evolve होता है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सॉफ्टवेयर इवॉल्व होता है और चीज़ें स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक चीज़ें हमें प्रोवाइड होती रहती है और हम उसकी बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन कहते हैं। इसको हम एवोल्यूशनरी कहते हैं। एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल रिजेंबल